To our batchmates, Ram Nivas, A.R. Mohanty, Lian Kunga, G. Krishnaiya, and L.V. Reddy. Though you are not with us today, you were and are an inalienable part of the 85 batch, and you are with us today as we come together to mark our 35th anniversary. None of us, least of all me, could have ever imagined or expected during our FC days that I would occupy the chair of the then director, the late lamented R.N. Chopra. And in my office, the most prominent place is occupied by this lovely statue of the Buddha that was presented by our batch, the 1985 batch, to the then director when we had come here for our Silver Jubilee celebrations in 2010. Hey, but let me rush to the gate because it's our 35th anniversary, and let me welcome you. Let me extend a very warm welcome to all my batchmates. But then the Dastur of the Academy means that you have to report first to the Sardar Patel Hall for your attendance. And if you are late, you will get your online memo. And now with this, let's report to our course coordinator, Philip Spratt Mohan. My dear friends of the 85 batch, I am delighted that you have decided to come together, albeit online, to celebrate your journey of 35 years of togetherness. From the grounds of Happy Valley, the ANJAR block, the classes at SPH, and in the main hall, and Leisure View, and the library during the early days on the foundational course, then on to the professional phase, and then your career in which many of you have occupied the most distinguished positions in the country. I am glad, honored, and touched by the fact that you have remembered me and the faculty which taught you during your foundation and professional course at the Academy. Many of your faculty members, for example, Director R.N. Chopra and Dada Banerjee, are no longer with us. But let me also recall my colleagues who were your counselors and helped to shape you. Let me place on record the support I had from Joint Director Mr. Parsati, who was formidable both in the class and on the tennis courts. Julius Sen, Keshav Desiraju, Professor Brijpal Singh, P.K. Kotial, and Anupam Shrestha, just to name a few. The fact that you keep coming back again and again gives you a very deep connect with the alma mater. Surina tells me that Ranaji is still as exuberant as ever, and even as I find it difficult to believe that the probationers of yesteryear have superannuated or on the verge of doing so, it makes me feel like an ancient mariner. But though I am old, I am not at sea, though Gurgaon does seem like one after a monsoon shower. Let me extend my warmest blessings to you and your families, and for many, your grandchildren as well. May the next years in your life be years of joy and contentment. For those of you who wish to be active, there is a world of opportunity before you. And for those who wish to engage in contemplation and reflection, there is no better time. In the end, I wish you all jewels of the 85 batch, good times in the years to come. These are difficult times,
And your expertise and experience will all be greatly needed by our country. Good luck and God bless. Come on, double up! Please follow now. Okay, friends, very good morning. I am S.S. Rana. As you know, we have imparted physical training to all of you in 35 years back. I am retired, but not tired. So please, let's come to the picture. Let's come to the point. We will start the physical training. Okay? Now, Savdhan! Westram! Savdhan! Now start jogging on the spot. Begin! Bring it up just high. Come on now. Start jumping. Okay, hold. Okay, jumps your polite. Begin. 1, 2, 3, 4, 5. Westram! Savdhan! Now Visarjan! 1, 2, 3.
this was a life in the foundation course in Bharat Darshan, and from here we moved on to our cadres to keep the country united, integrated, and as beautifully diverse as we found it. In the lines of Sardar Patel, you will not have a united India if you have not a good All India service which has the independence to speak its mind. Let's celebrate our cadres, let's celebrate the independence of our minds. गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम नहीं न छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम नहीं न छलके। गाड़ी को चलाना बाबू। जालिम है ये हिचकोले, जालिम है ये हिचकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले, है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले, मेरी जुल्फ उलझती जाए, मेरा नर्म कलेजा धड़के। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके। गाड़ी को चलाना बाबू। रफ्तार तेरी रंगीली, डर डर के मरे शर्मीली, रफ्तार तेरी रंगीली, डर डर के मरे शर्मीले, हो डर डर के मरे शर्मीले। Girl, it's really good to see you come around. I know you've been lost, I'm glad you got found, 'cause I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone, got a new feeling now, I won't let go till I can tell you for myself. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust. I won't ask you for too much, good conversation and such. And if I'm being honest, from time to time you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time you cross my mind. So stay with me just for the night. Got an old record in a beat up sleeve, that same sad song that you sang to me back when you couldn't say it for yourself. Look, I'd be lying if I said to you that I know exactly what I should do, but I've set my whole heart on trying. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust. I won't ask you for too much, good conversation and
time to time, you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time, you cross my mind. So stay with me just for the night. From time to time, you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time, you cross my mind. So stay with me just for the night. You cross my mind. Hi friends, great to see you after 35 years. I just can't imagine how 35 years just passed by. With me today I have D.S. Bhaskar, a good friend, a great batchmate and darling of the batch in the cadre. Bhaskar has been always with us and in the cadre, lovely cricket player. I can never imagine anybody playing with a better straight bat than Bhaskar. He loves to read books. He has got a lot of other interests and he has been a great guy in the batch. Hi, thanks Sanjay. Hi friends, great pleasure talking to all of you on the occasion of the completion of 35 years in the IAS. Let me talk a few words about Rajiv Bora, who has just debuted office. He's a stylist. He really takes care of himself, grooms himself, you know. He combs his hair stylishly, dresses stylishly, walks stylishly, rides stylishly, and I'm not sure, but to my great relief, he also sleeps stylishly. And Sanjay Krishna, would you like to talk about some other fellow in the cadre? Yeah, Bhanu, the tall, dark, handsome Bhanu has been a darling in the batch in Assam cadre. I can never imagine, or we can never imagine administration in Assam without Bhanu in last 20 years. If history has to be written in Assam, the Bhanu will be there for at least last 20 years. He has really contributed immensely for development of Assam and he has been a great friend. For personally, I would always say that Bhanu stood with me in good times and bad times. And it's not only true for me, it's true for all other batchmates. Bhaskar. Now let me talk about Sailesh. The interesting thing about Sailesh is he shares my birthday. Well, let's see how it counts for me in any case. Sailesh is a default stylish fellow. By default, what I mean is whether he does anything or not, for himself or to himself, he looks stylish. He changes his size and shape quite often, as you might be knowing. But despite all that, I think style doesn't leave him. It sticks to him. Stylish, the stylist. And a very calm and composed man who studies his notes well before he writes down anything on the note. Oh, well, I think Sanjay would like to say something about some other batchmate now. Sumit. Yes. Sumit Jarrett. No, I know Sumit from my college days and I can never forget when I accompanied Sumit when he went to see Nisba for the first time. And we stayed together in Assam, in this colony in Khanapara as well as in Chanakyapuri. Sumit has been very, very serious person. He loves to talk about economics, loves to talk about management, and he really goes into the depth. I always appreciate his depth of knowledge in all these subjects, and who can forget his poetic comments in all our WhatsApp groups. I can never think of missing those comments. Always whenever there is something, we always look forward to seeing what Sumit has written on all these issues. Bhaskar? Well, now I should talk about Saraswati. Saraswati, as the name says, this guy has inherited the qualities of Saraswati. A brilliant guy, smart at the uptake, a physics whiz, but somehow down the line as he crossed the second half of the 40s, he's picked up a guitar, and ever since
I think guitar has not left him, and our parties are enlivened by his beautiful guitar. Saraswati, apart from being a brilliant officer, is a good musician, and I'm sure he will regale his grandchildren also with his guitar. Sri Ranjan, good friend, always, though he spent most of his times in Meghalaya, we kept meeting whenever we used to go to Shillong. Sri Ranjan has always been a priority, and he had a lovely family, and Sri Ranjan has been good friend and contributed immensely for Meghalaya government's administrative works, and in Government of India also in the child welfare and women, and he really worked very hard. And Sri Ranjan has been great guy for our batch. Well, I will now talk about Hector Marvine, nestled in the hills of Meghalaya, East Khasi Hills or Shillong. Hector very unobtrusively keeps working. He doesn't hector at all. He nudges. He gets his work done by nudging people. What a great talent. I never knew that till he is reaching his retirement. What a wonder, really. So therefore, Hector the nudger. We miss you, my dear, but only miss you as for in the service. But after the service, we will never miss you. You will be in our hearts. Have a great time, Hector. Sanjay? That's all, I think. Well, now I should speak about somebody who is sitting next to me. Sanjay Kumar Sanjay Krishna is his full name. And guys, he is the evergreen captain of Assam Meghalaya cadre. I would put Meghalaya also because I've not heard much representation from Meghalaya, even if it was there, but it was basically engulfed by the Assam, because we are so brotherly and we don't mind being engulfed by each other. And being an eternal captain, always a smile on the face, and taking a sport for a sport, a game for a game, he made life easy for everyone. So, you see, for 35 years he continues to be a captain. I don't know, having played cricket for so many years myself, I have never seen somebody captain a team, any team for 35 years. So, Sanjay, great for patience, great for perseverance. And now he's become captain of the bureaucratic team with equal ease, equal aplomb, and maintains calm and equipoise in the most trying circumstances. I get the chance to be with him when something tricky comes up and the guy simply doesn't flutter, nor do his fingers tremble. And he's got a flourishing signature, lovely handwriting, good endorsement. And he's very close to me as a friend. Yes. We have nothing really to hide with each other. And we are good family friends. My wife Malati and his wife Geetina are close friends. Sometimes, even if you don't meet daily, you tend to be good friends. And this is one such outstanding case. So, it is befitting that the introduction to the cadre or reintroduction to the cadre ends for Assam Meghalaya cadre with Sri Kumar Sanjay Krishna. We wish all the best to all of us. Yes. Let us all live well till we live. After that, we don't know what will happen, therefore we should not think about it. Let us live one day at a time, as they say in cricket, one session at a time. But what you don't enjoy today, you may not be able to enjoy tomorrow if you postpone. So don't postpone, my dears. Enjoy the moment like we are enjoying right now. Is it not, Sanjay?
अनिंदो मजूमदार, बहुत मस्त मौला है अनिंदो दादा, बहुत मस्त मौला है अनिंदो दादा, जानता है शादी से क्या होगा आदा, जानता है शादी से क्या होगा आदा, अंडमान में अपना नाम करा के आ गया, कितने बड़े बड़े काम करा के आ गया, कितने बड़े बड़े काम करा के आ गया। अनिल मुकीम, अनिल मुकीम है आदमी शरीफ, अनिल मुकीम है आदमी शरीफ, एक जैसा रहता है चाहे रबी हो या खरीफ, चीफ सेक्रेटरी बनकर भी न उसको कुछ गुमान है, सारे गुजरात में उसका इज्जत और मान है, सारे गुजरात में उसका इज्जत और मान है। चित्रा रामचंद्रन, खाली बैठकर प्रभु ने जब किया होगा चित्रण, खाली बैठकर प्रभु ने जब किया होगा चित्रण, तभी वो बना पाया होगा चित्रा रामचंद्रन। सभी चीज़ों का रखती वो ज्ञान है, बैच में उसकी अलग ही पहचान है, बैच में उसकी अलग ही पहचान है। दीनानाथ पांडे की जय। बिहार का लाल अब गुजरात में रहता है, बिहार का लाल अब गुजरात में रहता है, किसी से नहीं डरता जो मन में आए कहता है। संस्कृत का विद्वान है, संस्कृत का विद्वान है, बहुत विषयों को जाना, लोग आज भी याद करते भोजपुरी में उसका गाना। हीरा लाल सामरिया, भाई कुछ भी कहो, आदमी हीरा है अपना हीरा लाल, आदमी हीरा है अपना हीरा लाल, चुस्ती हर काम में और मस्त है चाल, बड़ा अच्छा नाम कमाया, बड़ा अच्छा नाम कमाया, न ली होगी कभी घूस, एकेडमी में कहलाता था बड़ा ही कंजूस। पूनम चंद परमार, अंदाज पूनम चंद का सबको ही भा गया, अंदाज पूनम चंद का सबको ही भा गया, व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो पूरा ही छा गया। ज्योतिष हो, आयुर्वेद, कृषि या इतिहास, लिखता है बहुत अच्छा, न करता कभी बकवास, न करता कभी बकवास। श्री रंजन, महान विचारों के हैं अपने श्री रंजन, महान विचारों के हैं अपने श्री रंजन, मितभाषी हैं पर करते मनोरंजन, मितभाषी हैं पर करते मनोरंजन। सर्विस पर उनको बहुत है नाज, कोई उल्टा पुल्टा बोले तो होते हैं नाराज, कोई उल्टा पुल्टा बोले तो होते हैं नाराज। सुमीत जैरथ, सुमीत ने शब्दों की जादूगरी दिखाई है, सुमीत ने शब्दों की जादूगरी दिखाई है, अंग्रेजी में दक्षता चाहे अर्थशास्त्र की पढ़ाई है, सभी की भलाई चाहे है सबका मित्र, उसकी ख्याति फैल रही यत्र तत्र सर्वत्र। सुरेश चंद, अजात शत्रु कहो तो सबसे पहले सुरेश का ही नाम आएगा, अजात शत्रु कहो तो सबसे पहले सुरेश का नाम आएगा, कुछ जानना चाहो तो उसको पूछो बड़ा काम आएगा। सबकी रखता जन्म कुंडली, सबकी रखता जन्म कुंडली, रोज सबको याद दिलाए, खाने पीने का करे प्रबंध, दोस्त कोई हैदराबाद आए, दोस्त कोई हैदराबाद आए। 1985 के मेरे सभी साथियों को श्रीकांत बाल्दी का हिमाचल के पांचों बैचमेट्स की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मसूरी की प्यारी यादों से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज दिल में मीठा सा एहसास देता है। हिमाचल काडर में हमारी शुरुआत हीपा की ट्रेनिंग से हुई और फिर मनाली में रॉक क्लाइंबिंग से हमारी बॉन्डिंग और अधिक बढ़ी। हम पांचों प्रदेश में एक परिवार के रूप में रहे और परिवार के रूप में ही आगे बढ़े। यदि किसी को वर्क लाइफ बैलेंस सीखना है तो बीके व साधना का कोई मुकाबला नहीं। साधना भाभी की पेंटिंग क्रिएटिविटी अद्भुत है। अनिमेश व सोनाक्षी अपने आप में हीरे हैं और आज करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मनीषा व नगीन आर मेड फॉर ईच अदर। नगीन का पर्यावरण प्रेम हिमाचल में ही नहीं आज पूरे देश में जाना जाता है। संजीव व अंशु एक अद्भुत कपल हैं। अंशु गुप्ता हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है और जॉय ऑफ लर्निंग से शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन का उन्होंने अलग जगाया है। चिंकल बहुत प्यारी बच्ची है और इस पैंडेमिक में गरीबों के लिए उसने जो किया उसको हम सब लोग जानते हैं। सुशील व डॉक्टर कविता नेगी
हमारे बैच के सबसे सौम्य कपल हैं। डॉक्टर कविता की सरलता व उनका परेशानियों से निपटकर आगे बढ़ने का साहस मुझे हमेशा कायल करता है। उमा बाल्दी हिमाचल में अपने सामाजिक काम के लिए जानी जाती है और उन्होंने हिमाचल को अपनी कर्मभूमि बनाया है। यह 35 वर्षों का ये सफ़र हिमाचल की खूबसूरत वादियों में कब निकल गया पता ही नहीं चला। हम पांचों बैचमेट्स भाग्यशाली हैं कि हमें हिमाचल जैसा प्रगतिशील व प्रकृति की सुंदरता से भरपूर राज्य में काम करने का मौका मिला। मैं हिमाचल का और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। IAS 1985 batch, the 9 Bankures from Karnataka. N. Sivasalam, the bulldozer of the batch है वो, किसी से डरता नहीं वो, बात करने में एक्सपर्ट है वो, किसी भी सब्जेक्ट पे कहो तैयार है वो. प्रदीप सिंह खरोला, the diplomat of the batch. प्रदीप खरोला, दिखता भोला, बुद्धि से चतुर और दिल का अनमोला.
जहां भी जाता ट्रांसफॉर्म ही कर देता, बस हो मेट्रो हो या अब उड़न खटोला। महेंद्र जैन, द योगा गुरु ऑफ द बैच, पता नहीं कहां खत्म कहां शुरू, कहते हैं सब इनको महेंद्र गुरु, वैसे तो यारों के यार हैं लेकिन सभी के लिए दिलदार हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड में इनका कोई मेल नहीं, अगर टेनिस कोर्ट पर महेंद्र न हो वो कोई खेल नहीं। रेणुका चिदम्बरम, after 20 years of hibernation, she appeared like a comet, blazed in the skies, and went out of orbit again. But she will always remain the heartthrob of the batch of 85. Yogendra Tripathi, the analysis master of the batch. योगेंद्र त्रिपाठी, ज्यादा सीधा थोड़ा सा नोटी, देश के पर्यटन का अब है घोड़ा और काठी, जो घोड़ा नहीं भागे तो मारे एक लाठी, उड़ता फिर घोड़ा और उस पर सवार हमारा सहपाठी। परमेश पांडे, द couldn't care less of the batch. पांडे परमेश की अब ऐश ही ऐश, काम भी अनोखा और सोच भी विशेष, बिहार का रतन, कर्नाटका की शान, यही परमेश की खास पहचान। ई वेंकटैया, द मिस्टर पेशेंट ऑफ द बैच। वेंकटैया, बैच का भैया, मंत्री आते सचिव जाते, पर राज्य समझ कल्याण का, वो ही नैया वही खिवैया। आंध्रा कैडर में नहीं सही, कर्नाटक में अब सिर्फ तेलुगु ही चलैया। अमिता प्रसाद, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ द बैच। कुमारी अमिता, चेहरे पे जिसके हमेशा स्माइल है। व्हाट्सएप की रानी एडमिन सयानी, सोचे हमेशा सबका हिता, ऐसी है हमारी प्यारी अमिता। भरतलाल मीना, द फील्ड का आदमी ऑफ द बैच। भरतलाल क्या कमाल, सेम टू सेम उसका हाल, वही चाल वही बाल, जहां जाए करे कमाल। इसका कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, सुपर एनिमेशन के बाद और भी एक्टिव हुआ।
अजय कुमार, कोरोना को जीत कर नाम सार्थक किया अजय, कोरोना को जीत कर नाम सार्थक किया अजय, क्यों ना फिर मिले तुझको विजय ही विजय। अपने से अधिक तुम्हें दूसरों का ख्याल है, आपकी विचार शैली तो कमाल ही कमाल है। अमित खरे ने किए हैं खरे काम, अमित खरे ने किए हैं खरे काम, घूसखोरों को उसने किया है बदनाम। अभी अभी शिक्षा प्रणाली में लाए महत्वपूर्ण बदलाव, काम करने का तो उसको बड़ा है चाव, काम करने का तो उसको बड़ा है चाव। अमिता है एक लड़की महान, पूरे बैच की वो है जान। अमिता है एक लड़की महान, पूरे बैच की वो है जान। खूब हंसती है और औरों को हंसाती है, मुश्किल में सबके वो काम आती है, मुश्किल में सबके वो काम आती है। गुदड़ी का लाल हमारा भरतलाल है, गुदड़ी का लाल हमारा भरतलाल है। हर काम में दिखाया उसने कमाल है, हर काम में दिखाया उसने कमाल है। मसूरी के पहाड़ों में जब सबसे आगे दौड़ा वो, मसूरी के पहाड़ों में जब सबसे आगे दौड़ा वो, अंदाज़ा लग गया था कि लंबी रेस का घोड़ा वो, कि लंबी रेस का घोड़ा वो। धनपत सिंह है व्यक्ति अनमोल, धनपत सिंह है व्यक्ति अनमोल। मन की बात कहता है चाहे लगे गोलमोल। बहुत हैं उसके चाहने वाले सारी आबादी में, बहुत हैं उसके चाहने वाले सारी आबादी में। खुद ही आके देख लेते हीरा की शादी में। मनीषा शर्मा, हमेशा खिलखिलाकर हंसती है मनीषा, हमेशा खिलखिलाकर हंसती है मनीषा। न क्रोध आता न कभी दांत पीसा। सौम्य मूर्ति और निश्चल स्वभाव है, सभी को पसंद उसका हाव भाव है, सभी को पसंद उसका हाव भाव है। Carter consists of all stars and everyone has done well in their jobs and in their life also. Starting with Praveen Pardesi, we are all aware that he did extremely well as Collector Latur when there was an earthquake, and then he did a good job when he was BMC Commissioner. All the steps which we see in Mumbai today were all initiated by Praveen Pardesi, and it is unfortunate that he had to leave, but I would rate his performance as outstanding during the BMC Commissioner. He's also been his energetic and reformist self in his whole tenure. Kunte has been his matured into a very, very stable gentleman who's held very, very responsible postings. He was BMC Commissioner. He is now the Additional Chief Secretary Home, Additional Chief Secretary GAD, one who is goes by the rules, looks into the merits of things, goes into details, and like his father, he's done extremely well in Maharashtra cadre. Sanjay Ubale, you all remember, he left us. He joined Tata Group as the CEO of Tata Realty. Did a very good job there. Now he's joined the Bill Gates Foundation. And thankfully he's come back to Mumbai because we were missing. Mumbai was missing Sanjay Ubale. Even in his tenure in the IAS, he was known as a very, very brilliant and honest officer. Next would be Mukesh Kullar. Mukesh has blossomed into a philosophical gentleman. He's done extremely well in the power sector. His expertise he has developed in this sector, presently as the member of MERC, the Regulatory Commission. In fact, I have been having very good spiritual and philosophical discussions with Mukesh, and a very, very, very knowledgeable guy. Next would be Kavita.
Kavita is someone who's changed almost completely. Kavita has become a meditation teacher. In her jobs, she did well as textile commissioner of the country and in Maharashtra in labor reforms, a computerization of the labor reforms. Then we have Giriraj. Okay, Giriraj has remained just the same. He's not changed. It's the same sober gentleman who has specialized in bamboo and is today probably the country's #1 expert in bamboo. But same suave, very gentle, very soft, very mature gentleman. That is our Giriraj, continues to be the same. Then Vandana. Vandana continues to keep her schoolgirl charms. She's as beautiful as ever. And in the job side, she has excelled in health and education sector. And of course, she's the life of every batch dinner which we have because of her beautiful singing. So done quite well and continues to look as young as ever. Then we have Ujjwal Uke. Ujjwal is also another person who has changed very substantially. He's blossoming after retirement. Last few years till retirement, he had started working towards social groups and upliftment of social groups. And now, as a motivational speaker and a spiritual speaker, he's doing extremely well. In fact, he invites us these days to give lectures in his group and is probably making more money than he ever made in his life as an IS officer. Then we have Shyamlal, the singer. Shyamlal is also another person who has changed from a very besura singer with great grit and determination. He is turned into a beautiful singer, and he's the life of every party now. In the job side, he excelled in water resources department and pollution control, and that probably has become his passion because we keep getting WhatsApp messages on pollution from him. Then we have Arvind. Nobody can forget Arvind because Arvind, our batch is known as Arvind's batch. Arvind I knew since the income tax days. We were both in income tax together, and he still is the same. I would say has softened quite a bit now. The old Hitler traits have become a little softened, but if you argue with him, you've had it. I will only say that Sanjay is a true flag bearer of what the civil services or the administrative services can be at its very best. All of us can follow in his footsteps as a man with integrity, dedication, and yet taking decisions to solve problems of the common people.
folks, here is the update on Team Rajasthan Royals. We started as a team of 10. Our 15 children joined as bright new players. Our current captain is Rajiv. 5 of us have declared retirement and hung up our shoes. The last batsman of our batch could play up to June 2023. And here goes the award-winning photos. See the indomitable Madhukar Dada and Kiran, passionate star of our batch, well known for her unique paintings, and the bright children, Narayani and Vishnu. Vishnu is a filmmaker in the making. Now see the super energetic family of Giri and Gagan and their two bright sons, Goldie and Govind, and their lovely daughter-in-law. Giri is as muscular and sweet as he used to be. No change. Rajiv now is Chief of Rajasthan Civil Service. We are proud of him. Don't go by his stern, serious looks in the photo. He continues to be as stylish and humorous and fun-loving as he has always been. So is ever gracious Isa and their daughter-in-law. His sons Siddharth and Shikha are as handsome as their father. Now strong man Sudarshan, beautiful Daisy, and their son handsome Sunny. They continue to be as charming and cheerful as they always have been. Sunny could have become a hero in Odia films, but he did not accept my suggestion. Next, Usa and Bien, the evergreen, effervescent people. See zero fat athletic Bien and ever smiling Usa and their smart children. Did you notice Bien receiving PhD degree? Doesn't he look like a PG student? Hemraj continues to be a good friend, albeit his majestic aloofness, quietness, reticence, and swagger. He is an authority in economics and teaches now. Ravi is the most athletic batchmate and fastest runner of the batch. His wife Seema is a senior manager of Indus Ind Bank. His sweet daughter Rimjim and son are doing excellent. And now yours sincerely. I and my wife Pinky are doing good. I contested last assembly election on Congress ticket from Cuttack and lost. My wife Pinky works as deputy director in the Department of Higher Education. I have two sons, Arunav and Anurup, and my sweet daughter-in-law, Dr. Kajol. Like our other batchmates, we are doing fine too. Commentary is now over. गिरीश चंद्र मुर्मू, छुपा रुस्तम कहें गिरीश चंद्र मुर्मू को तो सही होगा, छुपा रुस्तम कहें गिरीश चंद्र मुर्मू को तो सही होगा, अब जो भी वो करना चाहे वही होगा, गवर्नर भी रह चुका है, अब है महालेखाकार, सभी जगह हो रही है उसकी जय जयकार। राम मुइवा है जिसका नाम, मेरी बात मानो वो है असली राम, हमेशा ही चलता रहता ना करे कभी आराम, नॉर्थ ईस्ट में मशहूर हैं उसके सारे काम, नॉर्थ ईस्ट में मशहूर हैं उसके सारे काम। संजय वाले हैं महाराष्ट्र वाले, बहुत स्मार्ट होकर भी शर्माने वाले, बहुत स्मार्ट होकर भी शर्माने वाले, बहुत ऊंचाइयां चढ़ी दिन और रैन, बहुत ऊंचाइयां चढ़ी दिन और रैन, अपने बैच में कहलाते हैं परफेक्ट जेंटलमैन, अपने बैच में कहलाते हैं परफेक्ट जेंटलमैन।
अनीता भटनागर जैन। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है अनीता भटनागर, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है अनीता भटनागर। लिखती है तो भर देती है गागर में सागर। नृत्य का उसका अपना है अंदाज, नृत्य का उसका अपना है अंदाज। सारे बैच वालों को उस पर है नाज, सारे बैच वालों को उस पर है नाज। सरदार गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह की शायरी अब हो गई मशहूर है, गुरदीप सिंह की शायरी अब हो गई मशहूर है। इतना दर्द भरा है उसमें कोई बात तो ज़रूर है। उसका मन कह रहा है कुछ कुछ बारंबार, जब से आई है यूपी में योगी की सरकार। गिव ए बिग हैंड टू संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा चोप्स जिन्हें हम कहते हैं, अब एकेडमी के हैं डायरेक्टर और मसूरी में रहते हैं। बहुत हैं हाजिर जवाब, इतिहास के ज्ञानी और हिम्मत वाले हैं। उनसे ट्रेनिंग पाने वाले बहुत ही किस्मत वाले हैं, उनसे ट्रेनिंग पाने वाले बहुत ही किस्मत वाले हैं। 25 years have flown by, and we come back again to the Academy to celebrate a Silver Jubilee. In fact, our batch sets the tone. We were the first to celebrate a Silver Jubilee. We're also the first to do our online celebrations. Knock, knock. It's phase 5 now. The last time that we came together to the Academy as a group while still in service. Good evening, dear colleagues. It's so nice to be here together with all of you. Since I have a very limited time, I would like to share with you a song by Eric Clapton. It's known as Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door. It's just about us who are all about to give up our guns and retire from service. Mama, take this patch of me. Well, I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, take these guns off me. Well, I can't use them anymore. This long dark cloud is getting down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
आधुनिक शिक्षा प्राप्त 160 रंगीन मिजाजी भारत निर्माण का जज्बा लेकर सद्यः किशोर किशोरियां पुस्तकालय चतुष्पथ पर ठहर कर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का मार्ग बस पूछते दिखे माह अगस्त में। आशा, अपेक्षा और गगनचुंबी इरादों से लवरेज साहब से सेवक बनने की लालसा से ओतप्रोत दस्तक देते हैं मसूरी में। प्रशिक्षण ने हीरे जैसे चमकीले और मजबूत मन को क्रोध एवं आवेग के प्रबंधन का दायित्व एस.एच. मोहन को दिया, पर मोहन जी तो बंसीधर नहीं सुदर्शन चक्रधर निकले। पहाड़ों से पंगा मत लेना जैसे सुझाव मानव सुरक्षा कवच हो। अनुपम जैसा कुलश्रेष्ठ, जूलियस जैसा सीजर, राणा जैसा महाराणा 85 के सखाओं को मिला। हम भी तो आत्मशोध के लिए तत्पर थे। इतिहास तो तटस्थों का भी लिखा जाता है, पर भूगोल एवं वर्तमान सदा साहसियों कुशल प्रशासकों का। एलबी रेड्डी को तिरंगा पहनाने की सजा मिली तिरंगे में लिपट कर, पर लाल चौक पर तिरंगा बतौर उपराज्यपाल मान्यवर गिरीश को सौभाग्य मिला। कैंपस नियुक्ति का नया इतिहास। शासन, प्रशासन, अनुशासन एवं सुशासन के प्रति हम अरुणाचल से अस्ताचलगामी सूरज की लालिमा बिखेरने के लिए सदा लालायित हैं, आतुर हैं, अधीर हैं, असुधीर हैं। गरीब मुक्त भारत, अड़चन मुक्त व्यापार और चिंता मुक्त जीवन, बस इतना सा ख्वाब है। आइए नतमस्तक हों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रति, जहाँ इस खूबसूरत ख्वाब को परवान चढ़ा। धन्यवाद। जय हिंद। Today is a red letter day for 85 at the rate of 35. The contemporary Corona times are certainly not the congenial times, but folks, nevertheless, our spirits are strong, even though the flesh may be weak. A toast for all our dear batchmates, for everyone's health and happiness, weal and welfare, peace and prosperity individually, and collectively for the batch's team spirit, camaraderie, and esprit de corps. 3 cheers for the 85 batch, which has no match, and which other batches cannot measure up and catch. And may the good times soon hatch. Amen. To the 85 batch. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी। Now we have a surprise from Serena, a surprise that will last the journey of her life. Celebrate at 85. Good evening, friends. We are a bunch of talented people. Our talents are numerous and our creations are really precious. So we are presenting to you today a virtual platform where all of us can share those creations, where all of us can store this heritage. So we can build this virtual heritage. So we present before you Create at 85.
सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है। सहमा दिल तक करे दिन है या ये रात है। हाय तू मेहरबान क्यों हो गया बाप, खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है। Friends, we present here a medley of songs. Hope you will enjoy. Thank you. तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल से गिरा दे तो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। सुनो गजल क्या गाए समय गुजरता जाए। हो रे जीने वाले हो रे भोले वाले हो लाला हो लाला। किन चुने पल है तेरे जीवन के, धूम मचा ले अभी दिन है मिलन के। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरी गोरी गोबा के छोरी कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है, मेरी खुशियाँ मेरे सपने यह करते हुए शाम हुई, 3 पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है। We the 160 started our journey on 26 August 1985. We the 16 were very much part of it. Now after Barbara leaving we are only 50 and we continue our walk for tomorrow. Enjoy.